बोलो बोलो. What more can we get? हमें सच्चा मार्ग मिलता है, हमें सच्चा मार्ग पता चलता है. There you go. Very important. सुख शांति तो आगे जाके मिलेगी हमको, लेकिन हमको भगवान इंस्पायर करते हैं सच्चे मार्ग पर चलने के लिए, है कि नहीं? समझ आता है कि हमको कब क्या करना चाहिए और कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी. वेरी गुड. अच्छा अर्निशा, मुझे बताओ कि कैसे होगी सम्यक दर्शन? भगवान ने आके तुम्हारे कान में बताया ऐसे? अर्निशा, फिर जब हम उधर जाएंगे हमको थोड़ा सा कुछ उधर जाकर हमें पता चलेगा. All right. Okay, we'll discuss this a little more. Okay, चलिए. अभी we've gone live. अब मंगलाचरण कौन करेगा आज? Whoever joined first. First किसने join किया था आज? Who was first? I think it was Aram who was first. है ना Aram? No, actually we had Navya who was first. Aram तो third आया था. We had Navya, but Navya की तो आवाज ही नहीं आ रही है. I don't know what he's doing behind the screen. चलो, who joined? There we go. चलो Navya, अपना वीडियो ऑन कर लो और मंगलाचरण कर लो. See, you have the honor of doing the मंगलाचरण in the Parmagam honors class. So खुल जा सिम सिम, अपने वीडियो को खोल दो. But I don't know any Mangalacharan, honestly. Really? Of course you know. बोलो किस ग्रंथ का मंगलाचरण तुम्हें आता है? Yes, of course you know it. अच्छा, कौन नव्य को रिमाइंड करेगा? कोई भी, क्विक. और उसका मंत्र? No, yes, I know this. बोलो. Okay. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayaryanam, Namo Vijyanam, Namo Sasavanam, Eso Panchanam Mukharu, Savo Panasano, Mangalan Chisavisim, Padamam, Holy Mangalam. बहुत सुंदर. अच्छा, इस ग्रंथ के बारे में today is going to be a bit of a different session, okay? कुछ अलग हो जाए. Tell me, what all do you know about this मंगलाचरण or this ग्रंथ? जो पता है सबको एक चांस है. Okay, Khyati कहती है it removes your sins. Okay, one rule in... How many points do we have to say? Only 1 point. Not more than 3. Okay, give others also a chance. अच्छा, do a favor on others. एक second बेटा, do a favor on each other. जिनके भी कैमरे बंद है, कैमरे खोल दो. You believe me, you look very nice. Okay, चलो, one per person. We'll start with Navya only. Ma'am, this Granth was written by Pushpadant Maharaj, Bahubali and Pushpadant. No, Bhutbali, I think, and Pushpadant. Yes, it wasn't written by anyone. No. 1 second. The Manglacharan was actually not created by anyone, but it was first written. It was scripted by Bhutbali and Pushpadanta Acharya ji, as said by Navya. But the mantra is Anadi Nithan, like no one created it. So you're also right, Khyati, in a way. Chalo, Navya is done. Arnisha followed by Mihan, followed by Jia. It has more than, we can tell it in more than 1,000 ways. You know what? 1,000 से बहुत ज्यादा. 8.4 million, 84 लाख मंत्र की उत्पत्ति होती है उस अकेले महामंत्र से. That's why it's called a महामंत्र. Ma'am, tell you what was Arnisha's point? बोलो Arnisha, दोबारा बोलो. हम उसे 1 लाख से ज्यादा तरीकों में बोल सकते हैं. Yes, more than 8 lakh ways. अलग अलग मंत्र उससे स्टार्ट होते हैं, उससे उद्भवते हैं. नमोकार मंत्र? Yes, from that mantra. Okay, that's why it's called Mool Mantra. Yes, Mihan followed by Arjavarohi. Sorry, Jia followed. Ma'am, Shatkhandagam was the first Shastra written, and the day on which it was completed is called Shrut Panch. Perfect. Jia followed by Arjavarohi. It has a lot of other names like Mahamantra, Aprajit Mantra, Mool Mantra. 2 more. Come on, let's do. You know one which we say every day. The last one. Saukar Mantra. Yeah, and one more. Very good. Okay, very, very nice. Yes, Arjavarohi. It is in a Prakrit Bhasha, and it has
चार पद 4 पद है. ओके, कितनी? and 35 मात्रा and 40 नहीं 35 मात्रा अक्षर and 58 मात्रा. Okay, now you said 4 पद, but ऐसा भी कहते हैं 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्रा. ऐसा चरण और 5 पद. Yes, तो पद तो 5 है. Okay, pad means there's 5 subheadings to whom we bow. Okay, but charan 4 है. Now what does this charan mean? कौन 4 चरणों में बताएगा सुनाकर? मंत्र में कौन 4 चरणों में बताएगा सुनाकर? What are pad and चरणों? Okay, जो भी सुनाएगा वो ये डिफरेंस भी बताएगा. Yes, आर्जव, आप बताओ. आप डिफरेंस बताओ और अरहम सुनाएगा. पदों में तो 5 पदों को नमस्कार किया है. अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु. 4 चरण है. जैसे हम लोग बोलते हैं तो उसे 4 चरण में बोलता है. गाथा वो गाथा छंद तो उसे 4 चरण में बोलता है. करेक्ट. गाथा छंद मतलब there's different types of verses. Okay, जिस छंद में लिखते हैं अलग अलग टाइप है. तो ये मंत्र लिखा गया है गाथा छंद में. और कुछ लोग इसको आर्या छंद भी कहते हैं. Why is that so? Because one name is in Prakrit and one is in Sanskrit. Okay, that's the only difference. No other difference. Okay, chalo. Arham I exactly didn't understand what are charan. अच्छा, अरहम सुनाएगा what are charan. अरहम इसको सुनाओ 4 चरण. I'll count the charan and you listen. नमो अरहंतानम, नमो सीतानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सवसाहुनम. So the first and then second and third were together and then third and fourth line. That's what it's meant by charan. जैसे हम मंत्र में देखते हैं ना, there's comma between the second and third. Okay? I'll show you in the book. अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, I'll explain to you in the book. ठीक है मियां? No problem. Okay, anyone else? For Ekansh and Om, we are just doing a quick revision and we are going to have a very different class today, which you haven't had before. अच्छा, और कौन क्या बताना चाहेगा about this mantra? 3 very salient features, 3 very special things about this mantra. Chalo, 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 quick. Destroys your past. 1 second. 1 second. अच्छा, ओम आप बोलो पहले. It destroys your past sins. Okay, point 3 will be destroys your past sins. Very important. First point. Mihan. Ma'am, can I? Mihan, आप ही का तो नाम है? Yeah. Ma'am, I want the second thing is while you are saying that mantra, so right now if I'm saying the Namokar mantra, मेरे को present में कोई पाप नहीं होता. Perfect. And Again, how is past का पाप gone, like Om said? The No. Namokar mantra only does present, right? he did not say past का. He said सभी पापों का नाश होता है. He removes all the sins. He did not say past का. Okay, one more very important point. Okay, Prasiddhi का हाथ ऊपर था. Prasiddhi has not answered before yet. Ma'am, I had the same point. Same point. Okay. Ditto, Arjavarohi followed by Arham. जब हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ते तो हमारा मन शांत होता है. Okay. What else? मैम, ये पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है. बहुत सुंदर. पर सभी लोग एक ही पॉइंट नंबर 3 बोल रहे हैं. फर्स्ट 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना हमने नमोकार मंत्र का जिस्ट मतलब क्रक्स मतलब कोर ही नहीं समझा है. अर्जव, नमोकार मंत्र में 5 परमेश्वर को नमस्कार क्या गया है. ये तो हमने देख लिया. 2 more important. 1 very important. Okay, very important. इस मंत्र में हाँ बोलो अरहम. एनी गेसेस? चलो बोलो. मैम, ये मंत्र व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं करता, ये गुणों को नमस्कार करता है. There you go. इस मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं. You know there are 8.4 million mantras. Okay, लेकिन उन सब में नमोकार मंत्र इतना सुपर स्पेशल क्यों है?
because no person is bowing down. नमोकार मंत्र में ना कभी मिहान का नाम आएगा, ना कभी अरहम का आएगा, ना कभी ओम का, ना कभी जिया का, लेकिन हम सबका आ सकता है एज अरिहंत और सिद्ध, है ना? सो व्यक्ति विशेष, दिस इज वन इंपॉर्टेंट टेक अवे, नेवर फॉरगेट इट. जैसे कोई जिया को उठाए रात को 2 बजे, क्या वो भूल जाएगी मैं अपना नाम? विल जिया थिंक आई एम गीत? ऐसा कभी नहीं होगा, है ना? जैसे मिहान को या नव्य को कभी रात में लगेगा एम आई अ बॉय और अ गर्ल? ऐसा कभी नहीं लगेगा, है ना? जस्ट लाइक दैट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट नमोकार मंत्र, जो हम वी शुड नो देम टू बिलीव इन देम. ओके, किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड वो था कि इट रिमूव्स ऑल द सिंस, सब पापों का नाश, वो भी तो है, बट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम ऑन, यस बोलो. और सच्चे सुख का प्राप्त होता है. ओके, सच्चे सुख की प्राप्ति होती है. व्हाट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्विक क्विक क्विक, यस एकांश? मैम सारे परमेश्वरी को नमस्कार करता है वो. सारे परमेश्वरी को नमस्कार करता है. यस, सो व्हाट, वेरी गुड, एवरीवन इज राइट, बट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग. सारे परमेश्वरियों को नमस्कार क्यों करते हैं? उनके बताए हुए मार्ग पे चलने. ओके, राइट, तो सच्चा सुख मिलता है उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर. देयर इज वन थिंग दैट वी डोंट डू इन दिस नमोकार मंत्र. चलो अब बताओ, नाउ टू इजी. आस्क फॉर समथिंग. यस, हम इसमें कोई वांछा नहीं है. वी हैव नॉट आस्क्ड फॉर एनीथिंग. अच्छा, अब ऑनेस्टली बताओ अपने दिल पे हाथ रख के, कितने बार कौन कौन, यू डोंट हैव टू टेल मी, जस्ट टेल योरसेल्फ, को किस किसने नमोकार मंत्र बोला है और थोड़ी छोटी एक्सपेक्टेशन रखिए, मेरे नंबर अच्छे आ जाए, मेरी बुक गुम हो गई है, टेस्ट के पहले मिल जाए, या वॉट एवर. मुझे बहुत भूख लगी है, मम्मा को पाव भाजी, आई होप शी इज मेड पाव भाजी. एक नमोकार मंत्र बोल देंगे, हो जाएगा रेडी. व्हाट एल्स? बोलो अर्निशा. It happens sometimes with me before the test or when something bad happens. See, at least Arnisha is very honest, है ना? And I'll tell you one thing, there's nothing wrong in saying नमोकार मंत्र at all before the test. टेस्ट के पहले, टेस्ट के बाद, उठने के पहले, उठने के बाद, भोजन के पहले, भोजन के बाद, whether you're walking or waiting on the signal, always say namaskar mantra. The only bottom line is don't expect anything by saying the namaskar mantra. And I'll tell you. बोलो लब्धि. Agar if we say 9 lakh times Namaskar mantra, like 9 lakh times Namaskar mantra, we not get Narak Gati ka band ever. Really? Okay. I did not know this. अच्छा, क्यों? Why do you think so? ऐसे क्यों होगा? Someone said this to me. No, it might be right. My They question, you're right, Labdhi. You might be right. My question is, ऐसा क्यों होगा? बोलो अर्जा. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नमोकार मंत्र बोलने से हमारे भाव इतने शांत हो जाते हैं ना, नरक जाने के लिए तो. Or if we say one time Namo, like the Shabd of Namokar mantra, like Na, we say 1 crore Devati Devatas. Okay, all right. But still, my point is not coming here. मेरा point ये था कि नमोकार मंत्र बोल, when you are not asking for anything, that is where you get everything. This is very, very important. जब मैं कुछ भी मन में रखता हूं ना कि मुझे ये चाहिए, you might or might not get it. Okay? और स्पेशली भगवान के पास, हमारे भगवान है तो वीतराग, उनके पास कुछ भी नहीं है. ओके? और हम उनसे क्या मांगते हैं? या तो मार्क्स मांगते हैं, या तो थोड़ा बहुत सोना चांदी मांगेंगे. You want some riches, you want some wealth. तो ऐसे संसारी लोग कैसे भिखारी है हम लोग? ऐसी चीजें मांगेंगे हम? नो, हम तो बस, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप जैसा बनना है. What does that mean? I don't want anything. I just want to become like you, where I don't have any desires. कि सबसे बड़ा रोग क्या है? हमारी इच्छाओं का. हमको लगता है कभी इच्छाएं ही रोग है. बोलो अर्निशा.
Ma'am, in Namokar mantra we only wish for that we had a pure soul. We had a pure, and you know what? भगवान कह रहे हैं, भगवान is not talking, but he's still speaking so much. हाँ बोलो आरोही. मैम हमारी कर्म हो गया. Sorry वापस. हमारी कर्म भी रोग है. हमारे कर्म भी रोग है. कितने सारे तो रोग है ना. कर्म रोग है, इच्छाएं रोग है, मिथ्यात्व रोग है, महारोग है. वी नो एवरीथिंग, बट इस सारे रोग से छुटकारा कैसे पाएंगे हम, ये बताओ. सम्यक दर्शन प्राप्त करके, सच्चा स्वरूप समझकर. वेरी नाइस. और ये सिर्फ हमको भगवान ही बता सकते हैं, विदाउट ओपनिंग हिज माउथ एट ऑल. भगवान की जो प्रतिमा है, भगवान कह रहे तुझे. हम जब जाते हैं ना, हैव आई टोल्ड यू ऑल दिस बिफोर, हम जैसे पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है तो हम बोलेंगे ना, मेटो मेटो जी पारस, तुमसे लागी लगन. सबको पता ही है, ले लो अपनी शरण पारस प्यारा. तो पार्श्वनाथ भगवान क्या कहते हैं, तुमसे लागी लगन. तो भगवान क्या कहते हैं, ले लो अपनी शरण. मेरी शरण में मत आना, अपनी शरण मतलब अपने आत्मा की शरण में आना, तभी संसार मिट जाएगा. सुना ये भजन सबने? तो नेक्स्ट टाइम रिमेम्बर कि भगवान इज, यू जस्ट हैव टू डिट्टो भगवान. भगवान जो कर रहे हैं बिल्कुल हमको वो ही करना है, बस तभी हमारा संसार पार हो जाएगा. ऑल राइट, दैट वाज अ लिटिल बिट टू स्टार्ट फॉर टुडे. एंड we have to do one paper, okay, which is a practical paper of case studies. बहुत interesting है, and that's why we started with, actually the reason we were discussing this was, हम सबको कभी कभी ऐसे embarrassed लगता है, awkward लगता है, कभी कभी शर्म आती है. किस किस को आती है? Because you are a Jain and you can't do many things. So Arnisha said yes sometimes, because friends कभी मना कर देते हैं किसी चीज के लिए. Jainism is all about no's and don'ts, do's and don'ts. ऐसे भी लगता है कभी कभी. Yes Mihan. Ma'am, I wanted to tell you that the question you asked, so like I don't feel ashamed, but sometimes I get irritated as not being a Jain, but like suppose we have a project in school, my school is not Jain. So there they say that we will take honors, and like I feel irritated that why do you want to do that? All right, okay, so we get irritated. Acha, Not for being a Jain, but for them like right, not and adjusting. you know what? Yeah, and you know what? Even if you are honest and say I get irritated because my friends, मेरे friends मेरी बहुत मजाक उड़ाते हैं, that is also fine. So just be honest and pour your hearts, because, and I'll tell you the reason why. Chalo, quickly, everyone. What is your biggest challenge of being a Jain? This is my question to y'all. Okay, be very honest. And you might not face the challenge now, but right from childhood until now. Come on. And if there is no challenges, फिर तो और भी अच्छा है. Yes, Ekansh. Previously, my friend used to tease me, मतलब वो अभी बोलते कि तुम जैन हो, कुछ आलू प्याज नहीं खाते, कुछ नहीं करते, तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आती. बट नाउ आई हैव मेड फ्रेंड्स सच लाइक कि वो एक्सेप्ट करते कि मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं, और क्या मेरे वैल्यूज है मेनली वो. तो उसको ओवरकम किया ऐसे. वेरी वेरी गुड. और देखो, जैसे जब रूट स्ट्रांग होते हैं ना, तभी उस पेड़ के ऊपर अच्छे फल फूल आएंगे ना. If there's weak roots, that plant might not be able to stand by itself. वैसे the deeper we go into Jainism and you understand what it is, okay, all your friends will not make fun of you, and even if they make fun of you, the best part comes here. अगर कोई मजाक उड़ाता भी है तो हमें राग द्वेष रोज बहुत करना चाहिए. True or false? No. False. If suppose ओम मेरा मजाक उड़ाता है, he is not going to do it, but suppose ओम या अरहम मेरा मजाक उड़ाता है, suppose, okay, और यदि मुझे उस पर गुस्सा आता है, I am not a true Jain at all. क्योंकि मैं रोज भगवान के पास दर्शन के लिए तो जाती थी, but the most important thing भगवान was telling me कि हाथ पे हाथ धरो ऐसे करना कुछ न रहा जैसे. पर मैं तो राग द्वेषी करती रह गई. I never realized what भगवान was trying to tell me in his silence. So don't do anger. Very good, Om. So silence speaks much louder than words. Yes, Khyati. Bolo.
My biggest challenge while being a Jain is to like wherever I go, like in a birthday party, I have to ask if the cake contains egg or if it's like non-veg or veg. Right. It- it's Now, would that be your challenging. biggest challenge for life? कि life में इससे No. भी बड़े challenges आ सकते हैं? No, that won't be the biggest one. That one is going to be the biggest. And do you think you can tackle that challenge? Yeah. All right, because see, I think I have the same challenge as you, but देखो हम अगर उस challenge को पार नहीं करते हैं, if we don't know what is in our food, if I don't ask people, okay, तो सबसे बड़ी problem क्या होगी? जो है वो खा लेते हैं, तो कितना पाप बांधेंगे? And you don't know, you might be born as food for someone else. क्या मतलब है इसका? Who can explain to me? If I don't check what's You in might my be born as an animal. as an animal, yes, you might be born as food on someone's table. Yes, Arnisha, bolo. I mean, even if in next birth we might be human, we might get killed by an animal or something. Very nice. And you know what? I have to tell you this true story. हम लोग जब Adelaide में रहते थे, I used to go to a clinic that time, and I had a nurse working with me that time, and she once told me they had a little goat. उनका farm था, and they had a little goat. Okay, जिनको उन्होंने ना, they had taken lots of good care of that goat. And one day in the evening, that goat got old. So they decided they will cut the goat and cook the goat for dinner. और उनका छोटा सा बच्चा था, like maybe 3 or 4 year old. And whatever was on the dinner table, वो उसको ना ऐसे pat कर रहा था. Whatever his goat's name was, Billy or something. Oh, this is my Billy. तो उसको इतना राग हो रहा था. So imagine, okay, I might be born, मैं ऐसे ही जन्म लूंगा, मैं भी किसी का भोजन बनूंगा. Imagine how painful it must be for that small little boy कि मेरा जो friend है, मेरा जो दोस्त है, मैं जिसके साथ खेलता था, वही मेरा भोजन बन गया है. And guess what? That has happened with you and me so many times. अनंत भावों में हमने यही किया है. बोलो बेटा. अगर आप कहूट के बारे में पूछ रहे हो, not yet आत्मिक. ओके, कहूट के लिए टाइम है अभी. ठीक है, बोलो एकांश. मैम, मेरे को एक डाउट है, जैसे निगोद में हम लोग रहते हैं तो बोलते हैं कि निगोद में 608 जीबी बाहर निकलते हैं निगोद से, और फिर अगर ये 608 जीब जो निकले हैं वापिस से निगोद में जाए तो वो कभी बाहर नहीं निकल सकते. Not ऐसा necessary. कुछ होता है? Not necessary. तो सुना था इसके लिए. There's 2 types of nigod, Nitya nigod and Pitar nigod. हाँ. Ma'am, but you can still come out of Nitya Nigod as Bharat Chakravarti's sons were in Nitya Nigod, and once they came out, they straightly became Bhagwan. They actually did not become straightly Bhagwan Mihan. No. So like they become Manusya, and after 8 years they did Atma Sadhana. Now you know what Ma'am, we can all. you explain the nigod concept? I will. Unclear. I will. And this is very important. पता है क्या? क्योंकि हमने ऐसा कहते हैं कि जीव का आपका मेरा headquarters is Nigod. Okay? So now that we are out of Nigod and we don't do the right thing, we are definitely going to go back to Nigod. Yes, Mihan followed by Jia. Ma'am, I wanted to ask you that now sometimes it happens that most of my classmates are veg and non-veg, and some of them are my friends. So like sometimes if I have to go to their parties, my mother tells that sometimes they eat non-veg at their house, even some of them even bring it to school. So then if I have to go to that party, should I bring my own tiffin, or then if they are making Jain food, I should eat there, or what to do? Very good question. Very, very good question. Okay, I know the answer. Let's see what Arnisha is thinking. Quick. The answer, we should like not eat that food. पता है क्या मिहान, वहां का फूड नहीं, वहां का पानी भी नहीं पीना चाहिए. Ma'am, I know why that is. हाँ बोलो. Quick. Ma'am, because if they make something non-veg or something, they will use the same hands and same tools for making the veg food. So that also is considered as pap. Yes. Now I have to tell you something very important, जो शायद आपने सुना हो या ना भी सुना हो. By the way, all the black slides here, turn your videos on. This is really important. Okay, this is life changing. It has changed my life and it might change yours also.
ओके देखो जहां भी मीट या नॉनवेज बनता है ना, ओके व्हाट इज मीट, नॉनवेज या मांसाहार किसको कहता है? त्रस जीव के शरीर को, राइट? वी हैड स्टडीड दिस, 2 3 4 5 इंद्रिय जीव के शरीर को मांसाहार कहते हैं. नाउ सी, एक इंद्रिय, हम लोग जो प्लांट्स या जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी भोजन करते हैं, एक इंद्रिय जीव को मांस नहीं कहते. फर्स्टली अंडरस्टैंड दैट. एक इंद्रिय जीव, they cannot scream, they will not shout, okay? But 2 3 4 5 sense जीव, okay, जब उनको as mass, as food, when they are cut, जब उनको छेदा या विदारा जाता है, when their bodies are cut, okay, and they are usually, जो भी animals होते हैं ना, big cows, buffaloes and all the other animals, pigs, उनको जब भी butcher when they are cut, उनके मुंह हमेशा बंद होते हैं. Now pay attention to this, okay? And you might get goosebumps. मुझे तो बोलते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते. Okay, their mouths are shut. तो remember, suppose तुम्हारा सबका मुंह मैं बंद कर दूं, okay? And someone is trying to cut you. You will shout, you will try to shout so loudly, है ना? Not cut, forget pinch भी करूं. मैं आके किसी का कान suppose मरोड़. Suppose किसी का छोटा भाई आरजव suppose आरोही को ऐसे कर रहा है, आत्मिक अरहम को ऐसे कर रहा है, तो you will feel like shouting, है ना? Natural reflex है, हम चिल्लाएंगे. तो जहां भी नॉनवेज बनता है वहां पर, so there's a study actually done on this, okay? Wherever non-veg is cooked or eaten, okay, बाहर से लाके अपने घर में भी खाया, तो वहां के जो वाइब्स होते हैं, वाइब्स मतलब एनर्जी, मतलब वाइब्रेशन जो होते हैं ना, इतने सिवियर, इतने इंटेंस होते हैं that if those animals were not tied, अगर उनका मुंह बंद नहीं किया होता, okay, so their scream could create a earthquake in that place on a Richter scale. Earthquake का जो unit आता है ना measurement का, on a Richter scale of 9 and above. अब पता है 7 का Richter scale also is very high. So imagine the vibes there. The vibes is, imagine the energy there. That's why they say we should never eat anywhere where there's non-veg cooked, or anywhere where there's a person eating non-veg. All right? Ma'am, then Yeah. you told that if their mouths were open, that on the Richter scale, whatever, Yeah. it would cause a earthquake of magnitude 9. So suppose if Mhm. we have even tied their mouths, if mouths open, they can cause such a havoc. So at least even if their mouths are tied up, one magnitude earthquake can happen, but that doesn't happen, right? Okay, it doesn't happen. So what does this signify? See, there is a reason why this study has been done. What does it signify? कि मुंह बंद रखे है, but just because my mouth was closed, just because they shut my mouth, did not mean कि मेरे कषाय नहीं हुए, isn't it? So wherever you eat, अगर तुम गुस्से में खाते हो, your food turns into poison. Okay, your water will turn into poison for the body. Otherwise, water can turn into medicine for the body. Agar gusse mein, or if you're doing too much dvesh on someone. That's why what you eat is important, how you eat is important, where you eat is also important, with whom you eat is also equally important. Okay, these are I've actually got a presentation which I can do for you guys sometime, but these are like basics of life and very, very important. Okay, तो वहां पर उस जीव के इतने क्लेश भाव होते हैं. Whenever we are dying, there's a lot of pain. And imagine when someone is being killed and they can't even shout. तो वो जो सारे क्लेश, वो जो सारे कषाय की एनर्जी जो है ना, that energy always stays there. And that energy will be transmitted onto us. Yes, Ekansh. Ma'am, then how do you manage in Australia? Well, हम लोग बाहर कहीं खाते नहीं है. We don't eat any restaurants. I've got a chakki at home. We don't eat at night. We don't eat in anyone else's place. When I go to work, I have my own chana hua, ubla hua pani, and we are okay. I'll tell you one rule. You should be very comfortable in your own skin. And we are very proud to be Jains. Both my kids also. They're old, 18 years and 22 years. पर वो भी रात में नहीं भोजन करते. And they are okay. Pallavi ma'am, but in Australia, like there is
So if there is veg hotels, not veg non-veg, so then do you eat there? There are two vegetarian hotels जहाँ Jain food मिलता है. So like in India now, my mother has also, now we mostly try not to eat at veg non-veg places. So Yeah. in veg places like in India, even in veg non-veg places, there is Jain food, except for some hotels. Hmm. So if I go in a veg place and I order Jain, so then That's okay. It's better than going to a non-veg place. Now, see, today's session is not all about food. Okay, it's very important. We are talking about food for thought. हम जैसा भोजन करते हैं वैसे हमारे thoughts influence होते हैं. That was the point. We should not make it all about food, but understand that what we eat, हम जो भोजन करते हैं और जो पानी पीते हैं, वो बहुत important है. I'll tell you one more very important thing about water. If I have not told this batch before. Someone had their hand up. Sorry, Arnisha, was it you? Bolo beta. Ma'am, whenever like we, our family goes out somewhere out of Aurangabad, we tell like pack a extra food in case we don't have to suffer if there is no veg place Yes. in out of our place. So then we don't have that much trouble. Correct. That's what we also do. और हम लोग कहीं दूसरी city में जाते हैं ना, we actually book an apartment. We can never stay in a hotel क्योंकि hotel में हम खाएंगे कहाँ? So we have to cook our own food there. हम पहले अपना भोजन कर लेते हैं, we pack out for our picnic and then we go. तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि उससे अच्छा अपने घर पे रहो, अपने आत्मा में मस्त रहो. बाहर जाएंगे तो कितनी सारी चीजें ले जानी पड़ती है. Right? Okay, बोलो मिहान. Ma'am, I had last two questions. Firstly, like when I used to go to abroad, like suppose, then at that time there is one in one country called Sweden, we couldn't cook properly at home. So then we had to use tortillas and everything, and we used to check it also. But then if we use tortillas and everything, तो वो तो बाहर का बना होता है, and like there wasn't much option of cooking, and on top of that, if we dry pack food, it can't stay for the whole picnic, and वो बासी गिना जाता है या नहीं? बासी गिना जाएगा बेटा, पर fruits खा लो, salad खा लो, whatever you have. And see, if you have to have tortillas, as long as they're vegetarian, egg free, it's okay. ठीक है, if you have to survive. I've also been to Sweden. I've been to Göteborg. Okay, but anyways, the bottom line here, हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं भी जाए, purity of thoughts will only come when there is purity of food, है ना? Purity of thoughts, word and action. तीनों भी उतने ही important है. That is the bottom line. Ma'am, I go to a veg non-veg school, so like there people even bring non-veg, which I don't like. So then then if I have to go to school and then I have my lunch packed, so there then how to like eat? See, You as told that far in as places possible. where non-veg is there, Correct. you can't. Yeah. Now listen to me. As far as possible, जितना हो सकता है आप avoid करो. 5 days a week if you go to school, 2 days if you don't have school, तब तो अपने घर में बैठ के शांति से नमोकार मंत्र बोल के you can eat, है ना? And also how to eat. हमेशा भोजन करने के पहले ऐसा विचार करो कि जितने भी मुनिराज है, जितने भी श्रावक है, सम्यक दृष्टि श्रावक जो आहार कर रहे, भोजन कर रहे, उन सबका निरंतराय भोजन हो. Always think, say your नमोकार मंत्र and then you eat. Even in school, if you can't do like that, मन में उच्चारण करो. Even when you are drinking water, do you know water has memory? Do you know this? Water is one element which has memory. And okay, I have to tell you this. By the way, is this interesting for y'all? This is like very practical stuff. So I think it's very important for everyone to know this. Okay. Now, एक scientist था. This is actually an experiment जिस पे बहुत सारा research हुआ है. There was one man and he took 2 bowls of water. Okay. और एक bowl जो पानी का था, उस bowl को उसने बहुत सारी बुरी चीजें बोली. He said very bad, rude and mean words to that bowl of water. Okay. Imagine 2 glass है, 2 bowls है. 2 लोटे है suppose, और 2 लोटों को, एक लोटे को बहुत बुरी चीजें कही. And then he took that water and he
put it on a plant. और वो जो plant है वो मुरझा गया. That plant died. And the other water, now he took that one and he said very good things to that water. Okay, very pure and Om bola hoga. He said nice things. And then he put that water to another plant and that plant thrived. इसका क्या मतलब है? Water has memory. So when you're even drinking water, say Om Arham Namah, say, if you can say Namakar mantra, very good. पर नहीं तो कम से कम ये दो चीजें तो आप बोल सकते हो. It will take fraction of a second to say that. Do you do that in real life? Yeah, it has actually been documented. He did that in real life. And when you say a mantra and drink your water, it becomes amrit for your body. Okay, the way you drink your water, never stand and drink. Okay, never like गट फटाफट बहुत प्यास लगी ऐसे कभी नहीं करो. बैठ के आराम से अच्छे से पानी पियो. And that water will become amrit for your body. Like it will really help you in many things. So these are very... हाँ बोलो बेटा. But in school, you can't like do all that stuff. We have to drink it fast and go inside. So how can I do at school? Okay, see, fast means अगर आपको 1 minute मिला है, अगर आपको 30 seconds मिले हैं, so instead of drinking in 10 seconds, you can use the entire 30 seconds. This is what I mean. But I am... Sit and drink and all that. Sit and drink नहीं कर सकते हो? No. All right, then you stand and drink. But 24 hours, out of 24 hours, you're not eating anything at night, say. तो दिन के 8 घंटे में, 1 day you're, 2 days you're not in school, है ना? Saturday, Sunday. तब तो घर पे अच्छे से बैठो या शाम में जब भोजन करते हो तब अच्छे से भोजन कर लो, है ना? So whatever you can do, we are not talking about can'ts. We are only talking about can. I can. Ma'am, what to say while drinking water? Which is whatever is your best mantra. आप बोलो which is your best mantra. Do you have any mantra to say as Namakar mantra takes time? Oh, I have given you 2 more mantras which don't take time. Om. Okay, Om तो आपके बगल में बैठा. He's sitting right next to you on the screen. Okay, और दूसरा मंत्र भी हमारे पास यही है. He's sitting right in this corner here. Arham. Okay, very strong mantras. And you can put both the mantras together also. Om Arham Namaha. It takes what? A fraction of a second to say that. But it is very powerful. Okay? Chalo. Now, should we go? So we spoke a little bit about challenges. And the reason I spoke to you about challenges is, once a month, हमारा जैसे master class होता है, do you think once a month, we should have a class for life challenges? For life skills? Would that be interesting for you all? Yes or no? Yes, miss. All right, we'll do that. And the challenges will be yours. And I'll give you all the solutions. But the solutions will all be based on our Jinvani, our Shastra. Okay? So you're still learning Jainism, but you're learning how to apply it. आप ये सीखोगे कि कैसे apply करना है उसको real life में. ठीक है? Chalo. Now, I'm going to share my screen. We'll do something very interesting today. Okay? 1 second. आज का जो हमने जो लास्ट वीक में टॉपिक किया था, गिव मी 1 सेकेंड, हमने 7 तत्व का टॉपिक किया था. यहाँ पर किसने 7 तत्व पहले पढ़े? शाश्वत अपना वीडियो ऑन कर लो बेटा. 7 तत्व मिहान ने पढ़े. ओके, मेनी ऑफ यू ऑल हैव लर्न 7 तत्व. बिफोर दैट, Jia, did you have a question before? I think you'd put your hand. 1 second. Ma'am, I know that also. And Yeah, I was just going to ask that, can you explain the Nigod wala topic later? Oh yes. And see, Ekansh wanted to know about Nigod, and sorry, I missed that bit. So I'll repeat it today, and then I'll repeat it tomorrow also for Ekansh. And Arham, hath niche karo, I'll come to you very soon. So Nigod is that place jahan par Nigod is not a particular place, okay? Nigod is those type of jeeves who take birth and die very rapidly, okay? तो जहां पर सिर्फ birth और death वो ही है, alright? तो ऐसा कहते हैं एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जीव करता है. And we all have been in Nigod many times before. They say there's 2 types of Nigod. One is Nitya Nigod, where all you're doing is... Pallavi ma'am, हाँ बोलो. you told that in ek shwas the Nigod jeev do 18 times Janma Maran, but actually when I also go to another Pachhala in that we are learning Chordala right now.
So that gatha was there. In that, I used to always think that they said that एक श्वास में once I breathe once 18 times निगोद जीव का जन्म मरण होता है. But in that, when I read it properly and the teacher explained me, she told that in that one एक श्वास का time में 18 times होता है, not one breath. So that is same. एक श्वास के time में means by the time you take a inhale and a exhale, they have already taken 18 births and died 18 times. That's what they mean. Okay. So now let me explain that to you. So there's two types of nigod, nitya and itar. So nitya is where all that they are doing is janma maran. Okay. And nigodya means one sense jeev. Which one sense jeev? Vanaspati kai, plant based. Now plant based bhi two jeev hote hain. One is sadharan and one is pratyek. Sadharan matlab, and the word nigod actually means ek sharir ke anant swami. How you own your body? एक ही जिया है ना तुम्हारे बॉडी में, एक ही ओम है ओम के शरीर में. Like that, imagine आलू के शरीर के कितने स्वामी? How many owners? Infinite जीव उसके owners. That is the meaning of nigodya ji. Okay. So नित्य निगोड and इतर निगोड. Now the rule is हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलकर इतर निगोद में जाते हैं. व्हाट इज इतर निगोद? 2, 3, 4, 5 सेंस जीव्स. ठीक है. नित्य निगोद से निकलकर इतर निगोद में जाते हैं. एंड वन मोर रूल, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव संसार से निकल के कहाँ जाते हैं? मोक्ष में भी जाते हैं. So the 608, there's two things that happen for the 600. So we should be very thankful to that jeev who actually gave us space to come out of निगोद into त्रस पर्याय. है ना? कि एक जीव निकला तभी तो हमारा जीव यहाँ पर आया. So we should be very, very thankful कि हम इस त्रस पर्याय में आए हैं. And we are not doing anything now to go back to निगोद. हम सिर्फ ऊपर जाने के लिए बस सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान बन के विराजमान होने वाले हैं. ठीक है? Very soon. Did you understand, Jia? And tomorrow when Ekansh comes, I'll explain to him again. Yes, अब बहुत सारे हाथ ऊपर है. अरहम बोलो. Ma'am, I know that Satattva, it is Bhav and Dravya. Yes, yes. And He, They, Upadev, Ye. अच्छा, चलो, very good. Very good. Yes, Mihan. आपको कुछ बोलना है? Mihan and Arnisha. Ma'am, like, could you just tell me again? So, what to do when people near you are eating non-veg? So, like, I feel really yucky in that. So, in one classroom, like, there are 40 to 41 people. Some of them remain absented, and a lot of people in that bring non-veg. So, like, I try to sit away, but then always it's not being possible. The most you can do is say नमोकार मंत्र. और वो जितने भी जीव मर गए हैं ना, just pray for the goodness of every soul. हर जीव को, किसी जीव को किसी को खाने के भाव ही नहीं होंगे तो कितना अच्छा होगा, है ना? ऐसी भावना भाना, ऐसी प्रकृष्ट is pure. So purity of your thoughts. Maybe just pray for all the jeeves. Okay. And I'm staying in that area where they eat that. So उसमें भी मुझे पाप लगता है if I eat my food while they are eating. Ideally, yes, but if you have a choice, you can go away. Okay. Just like हम लोग जब भी इंडिया आते हैं ना, so we never eat when food is served to everyone else. They always get the Jain food first. Jain eats first, and then they get all the other non-veg food for everyone, even in the flight. Okay. Yes, Om, bolo. Can we play a Kahoot? Can we play a Kahoot? Yes, we will. Yes. All questions done? All right. Quickly, we'll... हाँ, बोलो आर्चवार भाई. Ma'am, I heard that there is a one निगोद कि उससे बाहर हम लोग निकल ही नहीं सकते हैं. निकल नहीं सकते. That is नित्य निगोद. Okay. Ma'am, you told that we can get out of Nitya Nigod also as Bharat Chakravarti's son. Yes, from Nitya Nigod, you get out into Itar Nigod. Yes. So we all might have been in Nitya Nigod, but now we are, and then we came to Itar Nigod. Then, ma'am, how can we get out of Nitya Nigod then? Okay, so how can we get out of Nitya Nigod? ऐसा एक minute शुभ भाव होता है. Now,
How minute is that and how शुभ is that? ये आपको पता चलेगा बस जब केवल ज्ञान हो जाएगा. Because there are certain things which your and my knowledge will not understand. Okay, वो तो केवल ज्ञान पता चलेगा. ठीक है? चलो, now time for a Kahoot. बहुत time हो गया. Tomorrow we will start learning our next 7 तत्व के बाद वाला 6 आवश्यक. Okay? Pallavi ma'am, and I also have the problem with the book. So my mother registered it, and now again I've got Shakahar, Balbodh 1, Balbodh 2, Balbodh 3, and Agam Pravesh 1 to 3 instead of Vitrag Vignan. So did she request for Vitrag Vigyan or Balbodh? I don't know that. That I'll have to ask her. But when the parcel came to my house and I opened it, I saw that. I think. Ma'am, एक सेकंड ना बेटा. which name we have to? सॉरी, क्या पूछ रहे बेटा? मैम, अपने को जिनवानी का नाम डालना है, मुन्नीराज का डालना है, किसका डालना है? अच्छा, आज किसका नाम डालना है? आज आप बताओ, बोलो अर्जन. भगवान तीर्थंकर. अच्छा, सॉरी अर्जन, दोबारा बोलो. मैम, शास्त्रो. जिनवाणी. ओके, शास्त्र का डाल. All right, chalo. I'm sharing my screen now. Ma'am, I have the second Ma'am, test. should I tell my mother I'll to do talk that. to you afterwards? Yes, beta. I will talk to her. Yes, Jia, you can leave and do the second test. But make sure you read the Agam Pravesh 2 and Balbodh. Just scan through them. Can I do it over the weekend? Like tomorrow? It will be better if you get it done tomorrow, by tomorrow. Okay? Chali. Okay. It's for some Agam Pravesh too, right? Yes. And Balbodh. Balbodh too. Okay. Thank you. I don't know any Shastras. Of course you know Shastras. Samay Sar, Pravachan Sar, Niyam Sar, Panchastikay, Ashtapahud, Vard Sutra. There's so many Shastras. Come on. Can you tell me one, please? Yes, you can go for Samay Sar, Samay Sar. Or you can go Niyam Sar, Niyam Sar. Chalo. By the way, today the problem solving which we did you all enjoy it? Real life problem skills? Good. तो अंजीर नहीं खाना ये अष्टमूल गुणों में से एक है. True or false? गुड. हम सभी चावल और चावल से बनी हुई सारी चीजों का सेवन कर सकते हैं. इनमें से कौन सा फ्रूट त्याज वर्ज्य नहीं है? Which fruit can be eaten? It's not forbidden. Which is the fruit which you and I can eat? Yes, pear तो हम खा सकते हैं. Apples and pears. According to Mulgun, we cannot eat honey. What? Bro, Yes. We're not allowed to eat honey. True, but it's now coming to like ancestry class. Sorry बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैंने सही आंसर डाला पर एक मिनट बेटा, I couldn't hear you. Let's finish and then. Is it okay to eat there? No, it's not.
मूल गुण कितने होते हैं? Too easy. Too easy, too easy. Come on, this is an important one. It's never okay to eat it. Good. And the last question now. Yes, excellent. Arohi, now you can talk. I'll just stop sharing the screen. हम लोग देख लेते हैं. Panchastika, Yogasar and Niyam Sar. एक second, beta. Sorry, 1 second. Let me just turn this off. Okay. Sorry, अब बोलो बेटा. Ma'am, like in one question, like I put the true and it came like I have done wrong. But ma'am, it was written that honey is okay to eat. No, In it's not. Ashtamulga. Not okay. So we wrote false, then it was writing it's wrong. Yeah, like it's wrong. 1 second. Let me just look up there. Honey is not acceptable according to fundamental qualities. Yes, miss. So it was true. So it came like wrong. All right, I get you now. I'll tell the teacher, whoever has done that Kahoot, maybe she is just tricking us, and that's why she had written honey is not acceptable. What does that mean? Did you see that question? Did you see that question? Yes, Now this is. that Did you see that question? Let me just share it again. Okay, I'll ask that teacher. Nidhi Didi has created honey is not acceptable. So this is like one of those Hindi questions which teachers create for the exams. Okay, there's for juniors and seniors also. जिसमें उसको my mother didn't create it. No, your mother's name is also Nidhi. This is another teacher, beta. Okay, is there only one Nidhi here in the whole wide world? Acha, if we want any Nidhi, we should have Samyak Nidhi. Okay, Samyak Nidhi is the biggest wealth which no one will ever steal away. आपके पास है ऐसी Samyak Nidhi? Chalo, we will finish. Okay, Ma'am, can I leave? We all can leave. स्तुति ले लो. Arnisha, स्तुति बोल दो बेटा. Not today, beta. Maybe tomorrow. निज निधि में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार. जय जिनेन्द्र सभी को. लवली, do you Lavli and Khati, Uttam Kshama, do you really want to watch a movie today or you can wait until tomorrow? I'll leave it to you, beta. Today? अच्छा, अर्जुन को भी देखना है. ठीक है. ख्याति, do you want to share? Labdhi or ख्याति? Kathy gets it. All right. Quickly. Quick. Arham and Atmik, why are you fighting? Come on. ख्याति, are you sharing? Or Labdhi? Otherwise, all right. Yeah. Chalo, Arham or Atmik, Arnisha, ख्याति and Labdhi, time to watch a movie. I can't hear the sound. You can't share the sound. All right, give me a second then. Let me share one movie then.
एक सेकंड देना बेटा मुझको. We'll watch a nice movie. A short one, but a nice one. हमने ये देख ली क्या? डॉक्टर की सुनते हो, भगवान की क्या? I think we've seen this. आखिर कौन जीतेगा? This is a super cool one. Wix is your platform to perform on. A complete portfolio solution Stop means here. you can tell your unique story with confidence. From Did you your name know to what here fits your the vision movie that I was to sharing? bring your projects to Sorry, bolo. I was sharing a movie. Could you not hear it? No, we couldn't hear anything, beta. Oh, okay. I That's thought be- you could. No, because you hadn't shared the screen. Chalo, it's a very nice one today. I had shared the screen. उत्तम आकिंचन्य धर्म. ओए ओए ज्ञानी, मेरे ज्ञानी. कहाँ चले? अरे मनी, परिग्रह के धनी, हम तो सब घर बार छोड़ के जिन दरबार चले. तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे मांग, लेकिन यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सच्चा सुख और शांति का मार्ग मिल गया है. वैसे भी तुम्हारे बिना भी मेरा काम चल जाता है. अरे मैं ही सबसे मुख्य हूँ, यहाँ तक कि मैं ही सरकार हूँ, क्योंकि सरकार भी पैसे के बिना नहीं चलती. तू सरकार नहीं, सर्कस है सर्कस, जो देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन असल में कुछ भी नहीं होती, सिर्फ झूठा ड्रामा होता है. तुझे ये सब ड्रामा लग रहा है तो चल मेरे साथ. आज तो मैं प्रूव करके ही रहूंगा कौन सही है और कौन गलत. देख, ये है बंगला और ये है झोपड़ी. पैसा है तो घर है, जितना ज्यादा पैसा उतना अच्छा घर. और उसी घर में मर जाने का डर, क्योंकि जिस घर में ज्यादा पैसा उस घर में ज्यादा झगड़ा. लेकिन जिस घर में मैं रहता हूँ वहाँ घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है. लेकिन अपना घर ही नहीं होगा तो घर घर की ठोकरें खानी पड़ेगी. यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ. यदि निज घर नहीं पहचानोगे तो चार गति में दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी. जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह उसका ही होता है सबसे ज्यादा आग्रह. नहीं, जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह उसके पीछे लग जाते हैं उतने ग्रह. एक तो परिग्रह इकट्ठा करना और ऊपर से शांति की कामना करना. ये तो ऐसा पागलपन हुआ जैसे विष पीकर जिंदा रहने की कामना करना. अच्छा तो ये दूसरा एग्जाम्पल देख. ये सोने चांदी का व्यापारी है, इसके पीछे कोई ग्रह नहीं लगे हैं, बल्कि इसे देख कर तो सारे लोग सलाम करते हैं. सलाम. मेरे सामने सारी दुनिया झुकती है, क्योंकि उन्हें मुझसे ही सुख की प्राप्ति होती है. वो सुख नहीं, सुखाभास है. जैसे हिरण को रेगिस्तान में पानी दिखता है इसलिए वो दौड़ता रहता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता, क्योंकि वहां पानी होता ही नहीं. वहां पानी का मात्र आभास होता है. ठीक उसी तरह पूरी दुनिया सुख पाने के लिए दिन रात तेरे पीछे दौड़ती रहती है, लेकिन अंत तक सुख नहीं मिलता. तुम्हारे सामने तो सिर्फ मोही दुनिया झुकती है, लेकिन मेरे सामने पूरा 3 लोक झुकता है. अच्छा तो इस नौकरानी की तरफ देख. पैसा बढ़ाया तो ही काम करूंगी, वरना कल से नहीं आऊंगी. हाँ अब बोल, क्या बोलना है? अरे वो नौकरानी नहीं, रानी है, क्योंकि हमें ही उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनके लिए सारे काम छोड़ने पड़ते हैं. उनकी मर्जी के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते. तो इसमें असली नौकर कौन हुआ, असली दुखी कौन हुआ? अच्छा ये सब छोड़, अब जो मैं एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ ना, उसे देखकर तो तेरे तोते ही उड़ जाएंगे. देख, ये भिखारी है, इसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है, खाने के लिए धान्य नहीं है, बर्तन नहीं है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए ये दुखी है. फिर तो कपड़े का दुकानदार, बर्तन का दुकानदार, किराने का दुकानदार
ज्यादा सुखी होने चाहिए, क्योंकि उनके पास तो कपड़ा, बर्तन, राशन सब ज्यादा है। अरे ये तीनों भी जिसके पास ज्यादा है, वे श्रीमंत लोग भी कहाँ सुखी होते हैं, क्योंकि परिग्रह चिंता दुख ही मानो। और तुझे कितने एग्जाम्पल दे, सारी दुनिया में मेरे ही फॉलोवर्स हैं, तुम्हारे तो मुट्ठी भर भी फॉलोवर्स नहीं है। सही कहा तुमने, मेरे फॉलोवर्स कम है, क्योंकि संसारी जीव को सत्य से इतना दूर रखा है कि उसे समझने में बहुत देर हो जाती है। सुख की चाह में संपूर्ण जीवन परिग्रह प्राप्त करने में ही जाता है, लेकिन सुख का एक बिंदु भी नहीं मिलता, और ये बात समझने में इतनी देर हो जाती है कि तब तक मृत्यु आ जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता। अच्छा, ये लास्ट एग्जाम्पल देख, इस किसान को, इसके पास खेती ना होने के कारण, गाय बैल आदि पशु ना होने के कारण आत्महत्या कर रहा है। मैं नहीं हूँ इसलिए उसका कर्जा बढ़ रहा है। मैं तो सबके लिए उपयोगी हूँ ना। यही तो तुम्हारा भ्रम है। तुम जहां जाते हो वहां परेशानी, दुख, आकुलता, चिंता सब लेकर जाते हो। फिर यही जीव सारे जग से निराश होकर मेरे पास आते हैं, तब जाकर शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए तुम ना इस जन्म में उपयोगी हो, ना अगले जन्म में। अरे तुम तो उपयोगी हो ही नहीं। अब चाहे किसान हो या भिखारी या कोई और, सब अपने अपने पुण्य पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं, और तुझे सुख का कारण मानकर नए नए कर्म बांध रहे हैं। कुछ समय के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन मुझसे सुख तो मिलता ही है। तो फिर गलत बात कह रहा है। तुझे प्राप्त करने के लिए कष्ट करना पड़ता है, प्राप्त करने के बाद भी संभालने के लिए कष्ट करना पड़ता है। यदि संभाल नहीं पाए तो नष्ट होने के बाद भी कष्ट ही झेलना पड़ता है। तू तो तीनों काल में किसी को भी सुखी नहीं कर सकता। ये जानकर भी जो तुझे नहीं छोड़ता, उसकी दुर्गति निश्चित होती है। तो ये सारी दुनिया क्या पागल है जो मेरे पीछे पड़ी है? तो क्या सारे तीर्थंकर आदि महापुरुष पागल हैं जो तुम्हें छोड़ देते हैं? ओए मनी, कर मत कर यार, जीतने के लिए हो जा तैयार। लो, अब इसी की कमी थी। भाई जिसके पास पैसा है उसके पास हम हैं, और जिसके पास हम नहीं उसके पास सिर्फ घूम नहीं जाएगा बहुत दूर जिसके पास पैसा कम है। अब बताओ, पैसों की बिना किसमें इतना दम है? थैंक यू, थैंक यू। देखा, मेरे पास कार है और बिना कार का जीवन बेकार है। मेरे पास भी है एक कार। अब तो तू हार जाएगा इस बार। ऐसी कौन सी है कार जिससे तू करता है इतना प्यार? अच्छा, कोई गेस कर सकता है ज्ञान, इसके पास कौन सी कार है? ज्ञान, केवल मोक्ष प्राप्त करने की ज्ञान। नहीं, समथिंग मोर इजियर। कौन सी कार है? यस, इसके पास तो नमो कार है। मेरे पास है नमो कार, जो सीधा ले जाती है स्वर्ग मोक्ष के द्वार। देखा कैसी तेरी कार, हालत कर दी बेकार। अपघात होने पर भी नहीं बचाती किसी के भी प्राण। मरणासन्न कुत्ता भी बोला नमोकार, तो भी उसका बेड़ा हुआ पार। अपनी कषाय को छोड़ और कर ले ये स्वीकार, नमोकार की महिमा अपरंपार, नमोकार की महिमा अपरंपार। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। चलिए, बहुत मजा आया। आज हमारा टॉपिक भी स्टार्ट इसी पॉइंट पे हुआ था और एंड भी इसी पॉइंट पे। चलिए, कल मिलते हैं। और हैप्पी बर्थडे किसका था? आई कैन सी समथिंग बिहाइंड अरहम एंड आत्मिक। आत्मिक का बर्थडे था। आत्मिक का था कि आत्मा के शरीर, आत्मिक के शरीर का था? राइट, चलो, जय